Hello everyone, welcome back to Glorious English Coaching by Anshula. This is part 2 of simple present, present continuous, simple past and past continuous tense. We are going to have a practice video today. This is in continuation to what we did yesterday. You have to identify the tense and fill in the blank. She dashed me the truth yesterday. Not tell. उसने कल मुझे सच्चाई नहीं बताई या सच नहीं बताया. पिछले कल की बात है. Simple past. Answer will be didn't tell. Did के बाद हम verb का first form use करते हैं. While the children dash in the park. While यानी कि ये चीज़ चल रही होगी. It started raining while the children were playing. That means this is past continuous. Why dash your sister always dash so loudly? Always हमेशा. क्यों बोलती है? हमेशा की बात है. Simple present. Why does your sister? Sister is singular, तो does का यूज़ करेंगे. Why does your sister always speak? Do या does के बाद हम हमेशा verb का first form यूज़ करते हैं. I dash an important email right now. Right now यानी कि ये चीज़ चल रही होगी. Present continuous. I am writing an important email right now. The workers dash the road last week. पिछले हफ्ते की बात है और रिपेयर होने की बात है यानी कि ये चीज़ कंटिन्यूस में रहेगी. So this is past continuous and the answer will be the workers plural were repairing. पिछले हफ्ते वर्कर्स रोड को रिपेयर कर रहे थे, उसकी मरम्मत कर रहे थे, ठीक कर रहे थे. What dash you dash when I called you yesterday? पिछले कल आप क्या कर रहे थे ऐसा ही बोलेंगे. This is past continuous. What were you doing? आप क्या कर रहे थे? What were you doing when I called you yesterday? जब मैंने आपको कल कॉल किया था आप क्या कर रहे थे. He dashed to music every evening. Every यानी कि ये डेली रूटीन दिखा रहा है. Simple present. He listens to music every evening. The students dash for their exams these days. इन दिनों यानी कि ये चीज़ कंटिन्यूस में है. Present continuous. The students are studying for their exams these days. बच्चे या विद्यार्थी इन दिनों अपने एग्ज़ाम्स की या परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं. We dashed dinner when the electricity went out. इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जब लाइट गई थी तो हम डिनर कर रहे थे. डिनर की बात है. So it will be past continuous. We were having dinner.
हम अपना खाना खा रहे थे जब लाइट गई। Why dash she dash the room yesterday? पिछले कल की बात है, विदाउट परमिशन। वह कमरे से कल बिना परमिशन के क्यों निकल गई? सिंपल पास्ट। Why क्वेश्चन है तो हम डिड का यूज़ करेंगे। Why did she leave? That's all about today's video. See you in the next practice session video. Bye bye.